एनआईडी में भी अलाउड है, ये तो मतलब एनआईडी का तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एनआईडी देते स्कूल के डेस्क पे है, वो लोग के पास का घड़ी जो है वो भी चलता नहीं है, तो वॉच तो अलाउ करेंगे ही 100%। एग्जैक्टली एनआईडी में काफी मिसमैनेजमेंट थी, फॉर एग्जांपल एट लखनऊ सेंटर एटलीस्ट. So they had they will give you surprises in this way or other. They will give you surprises. You don't know the story, yeah? These people know the story. I've told them before. I got the universal paper first. मतलब मैंने दिया था इंटरेक्शन का अप्लाई किया था. They gave me the universal paper for the first 20 minutes. I solved the paper because उसमें लिखा नहीं था ना. They did not give a And अगर name. इंटरेक्शन का मिला भी होगा तो भी लगा होगा कि प्रोडक्ट का क्यों आ गया मेरे पास. Exactly. So universal का जब पेपर आया ना, तो universal का first question was how does an old man interact with a walking stick? Interact पढ़ लिया. मैं बोला हाँ अपना पेपर चलो फटाफट. I started doing. After 20 minutes, that lady comes. She's like, excuse me, I'm so sorry. I'm so sorry. This is not a paper. I'm like, हैं? फिर उसने मेरा पेपर किसी और को दिया, किसी और से पेपर मेरे को दे दिया. वो बंदी जिसको इंटरेस्ट का पेपर दिया था, वो 20 मिनट तक सोच रही थी. तो उसने कुछ नहीं बनाया था और मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया था बहन को. तो बहन जी ने मस्त में 2 क्वेश्चन यूज किए होंगे. तो ये तो बहुत मिसमैनेजमेंट है भाई, बहुत मिसमैनेजमेंट है. They gave me a school kids desk. वो LKG की, LKG UKG की. So I could barely sit and could put my stuff on the table. I had to put my stuff on the floor. So they had that level of mismanagement. बहुत मिसमैनेज. मैं तो 6 फीट हूँ, तो मेरे पैर बहुत लंबे हैं. वो पैर ही फिट नहीं हुए थे डेस्क के अंदर. तो मैं ऐसे ऐसे बैठ के दिया था. मैं 6 घंटे ऐसे कैसे बैठूंगा यार. अरे बहुत खराब है भाई. एनआईडी वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. And Seed was exactly the opposite. Seed भाई TCS Ion, that infrastructure building, ओ भाई साहब इतना हाई टेक बिल्डिंग था ना वो. बहुत सही था Seed का. Yeah. Okay, So yeah, thank one you. more thing Aparajita was हाँ. asking. So yeah, कि मतलब मेरा पर्सनली छूटा था ग्राफिक डिजाइन का, but I didn't completely left out a particular question. I attempted a part of it. Like मैंने सारे किए थे attempt, then I went through like finishing all of them. So you should also like at least rough work उसमें कर लो कि क्या तुमको बनाना है, and make a rough outline all of them. So even if at last if you don't get time, like you fumble up on some solution, so you will have something to present at least. And if you skip a question entirely, I guess you will not get a good score. Okay. Thank you. Yeah. Thank you Aparajita. Okay, Nafisha. Nafisha के Nafisha? Nafisha. Nafisha, okay. Yeah. Anji. Yeah, hello. I'm from an engineering background. I did computer science engineering. So the thing is, I'm bad at sketching. I haven't tried so far. Only for the past 1 year, I'm doing it. I don't know how to make sketches perfect. Like I'm just trying, but the thing was, it seems okay only, not good or better. That's it. So how should I do? Okay. So you should start, I guess, get your hands dirty with your previous year question paper, like what they have asked, what do they generally ask you to draw. So then if you they ask you these icons to draw or human figures to draw, maybe in problem identification, you should go to some YouTube videos or resources on YouTube, Google, to find out how to draw them. And yeah, go step by step. Don't rush yourself. Everyone has their own pace to learn things, so don't rush. Go step by step and it will fall in place. The thing is, actually, I tried lot of videos. I gone through lot of tutorials. I'm getting confused now. Everyone has their own set of style now. So I'm getting confused how to draw a hand in this perspective, like how to draw a hand like this, so and so. So what is the main thing to focus particularly? I guess also in Seed,
they don't judge you entirely on your sketching level. So even if you have not that great sketching level, they will be happy if you communicated your idea well. So a hand should look like a hand. So that will give you marks, I guess. Yeah. Okay, how to present the imagination thing to the paper? Like, what is a thing behind it? Like, how should we do? Usually, we have an idea and the imagination, no? Like, how to present it in the paper? Okay. So, for example, uh, give you an example for the table lamp question at NID. So they gave this question: "Ki design a table lamp for millennial." So you should like note all the keywords from the question. Okay, a table lamp has to be designed. Table lamp लिख लिया. Millennial. Okay, these are the keywords. You should decode your questions first and read it very carefully. And yeah, then you should then you should go to the factors that you are looking up, that the question wants you to have in your solution. For example, table lamp for the millennials. Okay, it should it should provide some light because it is a table lamp. Okay, it should be stable on your desk. So stable is another factor that is required. You should do all these little texty things that will not take much of your time and will give the examiner who is going to check your solution, give an idea, okay, that yeah, this person has thought of this. Okay, then eventually you will go through your entire process. Yeah. So if you wrote even if you write these things down in your solution, it will give them a fair idea what you were thinking while making it. So we have to present it through writings, no, when the sketches are not perfect. Yeah, I did so. Like I mentioned decoding a brief, then I wrote the keyword of the question itself. Then I mentioned what are the critical factors uh, for this product. So and then I wrote it down by like, okay, this should be this should be this. Then only one word, 1 2 word only, and then I making some alternative idea what came to my mind. For example, I made it in one form, in one idea, then in second idea in another form. So you give your some alternatives and then choose from these alternatives your final solution, what you are making finally and proposing as a solution. So yeah, if you provide these things, so I guess yeah, you will be good enough to show your process. And I don't think the things that I mentioned like before doing your final solution, it will not take that much time because you are just writing one word, 1 2 3 3 4 word max. It won't take your time much, and you are already doing this in your mind, like in the back end of your mind you are already doing this, but you are writing now on the paper. Yeah. Yeah, so through that the examiner will be communicated, okay, the person was thinking this. Yeah. Okay. So for the NID, we'll be given 30 minutes for the part 10, right? Yeah. So in that it will be like GK, Max, comprehension, so and so. Like how to split the time between them like, for the GK part. Usually the GK was like the vast thing. Whatever I study, I'm not able to attend it. Okay. 1 or 2 questions particularly. Yeah, so they had, I guess, 2 questions from GK last year. Only 2 questions Huh? were there. Three questions. 2 questions. The thing is, we can't predict the NID pattern. No, for the past year questions, it was like full of GKs and only 4 of max, and some questions like full of max. Okay, so what I did was like we used to do in like our school days, like go through the entire paper and then like start solving. I तो went like मैं कूद गया on questions में because we had very limited time, 30 minutes, and we couldn't waste any even like 2 minutes reading out entire paper. So I went
jump into it and did what seemed easy. I quickly marked those, and what took me some time, those questions I like circled them and went to them later on after like going through the entire paper once. So yeah. Oh, okay. For me, I got like 36 or 37 8 or 38 100%. But when I came out of the NID paper, na, I was sure मेरा part A full आएगा मेरे 38 and 38. It was so good part A. And मेरा strategy simple था, जो आता है सबसे पहले वो करो. Exactly. जो आता है ना वही सबसे पहले. मतलब फॉर एग्जांपल पहला दूसरा पहला आता है नहीं, दूसरा देख के समझ जाएगा आता है नहीं आता है. जो आता है वो जो आता है फटाफट कर दो पूरा पेपर फटाफट. 30 minutes 38 questions is a little tight मेरे हिसाब से, क्योंकि it's less than 1 minute per question. तो ना you फटाफट go through the entire paper first. जो आता है टिक मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ. फिर जो सॉल्व करने वाला है मतलब सॉल्व मैथ्स के प्रॉब्लम्स है, डोंट डू दैट स्टार्टिंग में. अगर यू गुड विथ मैथ्स जल्दी होता है तो ठीक है, बट इफ यू डोंट नो इफ टू टेक टाइम टू सॉल्व, वो पहले मत करना. क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक क्वेश्चन तुमने पकड़ लिया ठीक है, तो सॉल्व करना चालू कर दिया, 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, यू विल पैनिक और बाकी सब डूब जाएगा. तो ना मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल था कि भाई मॉक टेस्ट जब भी दिया था मैं, मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है. इट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन कि भाई क्वेश्चन इजी है बट प्रेशर की वजह से नहीं आ रहा तभी आंसर, क्योंकि तो मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है ना जो पैटर्न वाला होता है, तो 4 नंबर यहाँ दिए 3 यहाँ दिए 1 गेस करना होता है, दैट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सोचना पड़ता है थोड़ा. तो इफ दैट डजंट हैपन इन द फर्स्ट 2 minutes यू विल पैनिक, एंड जो फिर इजी भी है वो भी टफ लगेगा. So my strategy was सबसे पहले things like GK, things like simple MCQs टाइप जिसमें एक एक क्वेश्चन का एक एक चॉइस होता है या कोई इमेज दिया होगा, वो सब जो इजी वाले हैं फटाफट निपटा दो सबसे पहले. पहले 10 मिनट में एक पेपर स्कैन होना चाहिए, फर्स्ट 10 मिनट्स में पूरा पेपर स्कैन होना चाहिए, ऑल 38 क्वेश्चन जो आता है टिक कर दो. नेक्स्ट 10 minutes you start solving all the maths question, and the last 10 minutes whatever you didn't know at all बैठ के सोचो ऐसे, ओहो कहीं ना कहीं इसका नाम पढ़ा होगा, ओहो कहीं तो कहीं देखा होगा. एडवर्ड न्यूटन का मेरे को झट से पता था तो वो पहले ही टिक कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आई नहीं, तो वैसे यू स्टार्ट टिकिंग. 3 राउंड में करो 10 minutes each. Yeah, that would do good. And also I have applied for interaction and product. Okay. So what are the things should I focus for the last 10 days? Like not the 10 days to just 8 to 9 days. What should I focus on particularly for attending that questions? Interaction, Apurva, बताओ. Sorry, I didn't get your question. You have to draw products. I have applied for interaction and product. So what are all the things I should focus for this last days, like last 8 to 10 days? That's it. Okay, so yeah, again, give mocks and look what section you are not good enough, and you should start preparing on those topics. For sketching part, you should like बनाते रहो जब तक पेपर ना हो जाए. So अगर तुमने गैप छोड़ा तो your hands will not be in habit of drawing things quickly. So I'd suggest like drawing daily. And for product, I guess basic outline is like cuboids, sphere. If you draw these basic shape daily, so yeah, I guess you will make those like tiny notches in the products. You will detail out later on, but you should like start making cuboids, cubes, cones. You should make these daily, so they get into your habit. One more question, the last question. Like they always expect the 3D part, like 3D view of product. Is this? Yeah. Yeah, So they do. You should make maybe a little tilted version of your product, so that at least 3 sides of the product are visible, like adjacent front sides and the top side. So I usually draw it like in an isometric angle. View. Okay. So, yeah. Okay. You can also make like other views of that product. So like back side also, front side, bottom side, if you
have anything to show on that particular side of the product. Okay. And you must label what you are making. So yeah, whatever you have made, you must label. Like if you have made a button, you should make, okay, this is a button and what it serves for, what is its function. So yeah, that is enough. Thank you. Okay, thank you, Nafisha. Thank you. Okay, Sanket. Sanket, hi. हेलो। Hello. हाँ अपूर्व, जैसे आपने बोला था कि आपका पार्ट बी में ह्यूमन ड्राइंग एकदम मतलब नहीं आता आपको। आई एम फेसिंग सेम इशू, फिर भी आपके मार्क्स पार्ट बी में 66 आए थे। हाउ कैन यू सॉल्व? मतलब कैसे आपने क्या अप्रोच रखा था पार्ट बी के लिए? Okay. Yeah, so मेरे से नहीं बनता ह्यूमन फिगर, तो आई डिडंट इवन लाइक, मुझे पता था मेरे से नहीं बनेगा अगर मैं रियलिस्टिक जाऊंगा, अगर तो रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर में। देन आई ट्राइड, they want your uniqueness to reflect in your solution. So I went what I can draw. Like I draw these caricatures, like for the children books, though that style. Like so I made it like that, like very cartoonish. So eventually what matters is your communication of your ideas. So whatever style you prefer, you may draw in that style. Yeah. ओके, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कैरेक्टर दिया रहता है, फिर भी इमेजिनेशन करके मतलब हार्ड होता है वो। इसलिए मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी क्या रखे कि पहले सॉल्व करे या बाद में सॉल्व करे वो स्केचिंग वाला क्वेश्चन? ओके ओके या सो ये जो कार्टून वाली बात बता रहा था मैं, ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में किया था, जहाँ पे तुमको यू हैव टू शो द प्रॉब्लम्स एंड, तो मैंने कुछ बंदे भी उधर बनाए थे कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वॉश बेसिन से। सो फॉर द कैरेक्टर स्केचिंग, सो या दे प्रोवाइड यू द कैरेक्टर का आउटलाइन। सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट जाएगा। लाइक you should start from the stick figure, very basic, like कौन सा हाथ किधर जाएगा, कौन से एंगल पे होगा। तो yeah, that will help. Like again, after you have made that perfectly, बाद में तो तुमको बस उससे कॉपी करके इधर बस उसको बनाना ही है। तो get the basics right. Like again, like stick figure अगर तुम्हारा सही बन गया तो बाद में तो हो जाएगा। That I'd say. ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क ओके हो गया तो आगे का हो जाएगा। Yeah. Like ओके। that worked for और me. Yeah. और आगे के जो डूडलिंग के और जो प्रोडक्ट डिजाइन के स्केच थे, मतलब आपने कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? Me, sorry. मतलब आपने 2 घंटे में कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दिया और कौन सा क्वेश्चन पहले किया बाद में किया, स्टेप बाय स्टेप कौन से क्वेश्चन किए सीक्वेंस में? ओके ओके, काफी एक साल हो गया, मुझे याद भी नहीं। ओके तो मतलब आई फेल्ट आइकन मेकिंग काफी सिंपल होता है मेरे लिए, तो yeah, I started from that. First of all, I read all the questions. Okay, so then I wrote on the rough sheet. They provide you a rough sheet, so I marked, okay, there are 5 questions, 1 2 3 4 5. I mentioned like a list. Then I mentioned over each of the point, okay, this particular question belongs to, okay, character making. First is character making, second is icon, third is this, fourth is this. So I noted it down, and इससे मुझे ये रहता था कि ओके ये 5 क्वेश्चन है एंड इससे मैं मिस नहीं होऊंगा कोई क्वेश्चन करने से। लाइक अगर मैं, क्योंकि तुमको पेजेस में आगे पीछे करना पड़ता है, यू कैन मिस आउट ऑन सम क्वेश्चन। अगर तुमको एक स्क्रीन में दिखता रहेगा, एक जगह पे दिखता रहेगा, अगर अच्छा तुम्हारे पास इतने क्वेश्चन हैं, तुमको इतने करने हैं बाकी टाइम में, तो यू विल डिवाइड योर टाइम सबकॉन्शियसली, ओके इसमें हो गया, अब आगे चलते हैं। बट अगर वो दिखता नहीं है तो तुम उसी में लगे रहते हो। तो ये टिप तो काम की थी मेरे लिए थेरेपी। एंड या तो फिर मैंने ओके पढ़े सारे एंड देन वापस आया एंड देन स्टार्टेड फ्रॉम कि क्या आसान लगा मुझे, क्या करना चाहिए मुझे पहले, क्या इजीली हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट। सो मेरे लिए आइकन वाज इजी। ओके
So I started from it. Then प्रोडक्ट का किया मैंने, बस रफ आउटलाइन की, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस रफ आउटलाइनिंग वगैरह, कुछ कीवर्ड्स लिख के. देन आई केम आउट अगेन एट अ थर्ड स्टेज. फिर से आया मैं उन सब पे और इनको फाइनलाइज किया अच्छे से. तो या यू कैन फॉलो दिस लाइक टिप कि डिवाइड योर टाइम इन 3 stages. First you have to read all the question. The second stage you have to like do a basic rough patch work of your entire question solution, and the third stage finalizing all these things. Okay, thank you. Thank you. Okay, Sanket, thank you. Aita Gula. Hello, hi Apurv here. So my question is, in NID UG exam, should we concentrate more on creativity during the exam or sketch as fast as we can? Because creativity takes time, and if we start thinking for the best or the most creative, the most unique, it will take a lot of time. So which one should we do first? Sketch as fast as we can or concentrate more on creativity? I guess you should write down your ideas कि क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, and like give it a like 3 minutes का timer and write down कि क्या बना सकते हो उसमें, उस question में, and pick the one that you think is most creative and which makes you unique सब aspirants से जो paper लिख रहे हैं simultaneously. So pick that solution and go for it, I guess. Yeah. Like first we will do the thumbnail first. Sorry? The thumbnails. Thumbnails, what? Like first, before attempting the final question, we should do the thumbnails first, right? Yeah. Okay. Yeah, for me, Thank like you. I had like I write it down कि क्या दिमाग में चल रहा है मेरे, कोई आइडिया आ गया कि ऐसे बना सकते, या तो उसका रफ सा स्केच बना दिया या तो लिख दिया, तो हाँ फिर उसमें से पिक किया. तो आई डिवोटेड लाइक 3 minutes 2 minutes कि अच्छा इतने में बस सोचना है मेरे को, एंड जितने भी सोल्यूशन आ सकते हैं, जितने भी दिमाग में आइडियाज आ सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, दैट आई रोटेड डाउन एंड देन पिक्ड वन फ्रॉम दैट. Okay. Like I have a tendency that I have to make the best or the most unique, and I lose a lot of time. Okay. So this will save you from that, I guess. Yeah. If you are like if you are showing what you are thinking कि ये भी बना सकते, ये भी बना सकते, ये भी बना सकते, उस 3 मिनट में केवल आइडिया थिंकिंग वाले टाइम लिमिट में, एंड देन यू पिक फ्रॉम दैट. इट ऑल्सो गिव्स द एग्जामिनर एन आइडिया, ओके ये बंदे ने ये सोचा, एंड देन इसमें से एक क्वेश्चन, एक सोल्यूशन इसने पिक किया. तो दैट ऑल्सो गिव्स यू एन एज एंड ऑल्सो सेव्स योर टाइम कि अच्छा एक बना रहे हैं हम एंड उसमें कुछ लगा बाद में कि अच्छा ये तो फिट ही नहीं हो रहा क्वेश्चन में, देन उसको पूरा इरेज करके फिर नया बनाया, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. हाँ, okay. ठीक है, fine. Thank you. Thank you, Aditya. Okay, Swarnim. अच्छा, by the way, guys, आपको मैंने chat box में ना सब interaction के questions डाल दिए, just in case you want them to please copy paste कर लो एक बार. Yes, Swarnim. I have a basic question. Ask your basic question. मैंने ज्यादा एनआईटी के बारे में रिसर्च नहीं की और ज्यादा वीडियोस भी नहीं देखे, तो मैं तो बस यही पूछना चाह रहा था कि उसमें भी पार्ट ए अगर पास होता है तो ही पार्ट बी चेक होता है, ये सेम सिस्टम होता है क्या सीट जैसी? I don't remember. नहीं, नको. You should read the brochure first if you are appearing for this. Good question, Swarnim. Okay, I'm not 100% sure, but I remember the evaluation. क्या बोलते हैं उसका structure? It was 15% CDAT, and then it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter, ना मतलब हाँ, वो आखिर में वही 15% कर लेते उसका. हाँ. कुछ भी करो, मतलब फिर 45% इसका रहेगा स्केचिंग का, 45. और फिर रिमेनिंग 40% इंटरव्यू का. हाँ,
वो सीड में ही है भाई, वो सीड बवाल सीड में ही है कि पार्ट ए क्लियर नहीं किया तो पार्ट इसमें भी वैसे है ना, एनआईडी में भी तो वैसे ही है 1545 फिर 40 का। नहीं, वो वेटेज हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट स्वर्णिम का क्वेश्चन है कि सीड में पार्ट ए क्लियर हुआ तो ही पार्ट बी चेक होता है। एनआईडी में ऐसा है? एनआईडी में नहीं है ऐसा। नहीं है ना? हाँ, मेरे को भी नहीं लगता। बट इट इज आल्सो द सेम फॉर यूसीड। हाँ ओके। यूसीड में पार्ट भी कहाँ है? यूसीड में देयर इज नो स्केचिंग। No, यूसीड में एक स्केचिंग का क्वेश्चन आता है लास्ट में। क्वेश्चन आता है ना, वो 2 घंटे का स्केचिंग का पेपर अलग से नहीं है ना यूसीड में, दैट आई एम श्योर। हाँ ओके। हाँ, वैसा नहीं है, तो सीड में, सिर्फ सीड में इवैल्यूएशन के लिए। हाँ सर, पूछो। थैंक यू। और क्वेश्चन था? बस इतना ही? ओके स्वर्ण, थैंक यू। ठीक है, आशी आ जाओ। आशी, क्या पूछना था, क्या शेयर कर रही थी, बता। यहाँ पे एक्सप्लेन कर अच्छे से, क्या शेयर कर रही थी, मेरे को समझा नहीं। अरे वो भैया का अपूर्व का ब्लॉग था, वो शेयर करी थी। अच्छा, उसमें ओके। क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के, तो आप लोग बोल रहे थे कि भैया बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम में मैंने किसको भेजा है पता नहीं, तो मेरे को लगा कि मैं शेयर कर देती हूँ तो भैया ढंग से बता पाएंगे। अच्छा, ओके। नहीं, वो क्वेश्चंस पेपर की बात हो रही थी, इंटरव्यू के लिए पेपर के क्वेश्चंस जो भैया ने ग्रुप पे डाल दिए, आई मीन चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है। पूछो, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो ग्राफिक डिजाइन में जो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, कि ढेर सारे सिंबल्स दे दिए, उसे स्टोरी क्रिएट करना है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। और जैसे स्टोरी बन रही है तो फिर एक आध सिंबल ऐसा लगता है कि ये कम पड़ रहा है, और मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो उसे कैसे अप्रोच करें? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था एनआईडी में, आई गेस। सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्वेश्चन अच्छे से, बट आई बहुत डोंट। सारे आइकॉन्स दे देते हैं स्टोरी क्रिएट करनी, हाँ, और उसको Yeah. एक्सप्लेन करना है शायद स्टेप। so you have to make the story including all those icons, na? या हाँ, Yeah. So yeah, बहुत ज्यादा again, टाइम। again, like yeah, it takes time. So I don't know a strategy for it, but you should come across a story जिसमें ये सारे icon use हो. Like it was not a story, I guess. You have to sketch it out. Those icons. फिर भी मतलब जैसे एक सीक्वेंस, मतलब जितने भी लोगोस आइकॉन्स जो देते हैं, बस, कार और हाउस सेटिंग्स, जो भी, उसको एक सीक्वेंस में इस तरह से बनाना है कि उससे अगर देखें तो ऐसा लगे कोई स्टोरी क्रिएट हो रही है। तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है। Okay. I don't have an answer for this. मुझे याद है कि जब मैंने किया था बहुत गंदा तरीके से किया था, तो मत पूछो मेरे से। Okay, thank you, Ashi. Aditi, do you want to ask? कि मैं क्वेश्चन इधर कर दूं? पूछ ले, खुद ही पूछ ले, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे। Yeah. Hi, Apurv. Hello. Yeah. So my question is like, जो seed का जो एक ही form sensitivity वाला question होता है, so should we be labeling the one product is given, for example, the mixer grinder was given and we had to make the body, the jar was given. So उसपे like the knob and everything, should we be labeling it or should we just sketch? You can label it, no? You should label what you are drawing so that it communicates effectively. Okay, Yeah. all right. Thank you. Okay, I have a different take on this. They don't ask for labeling specifically, and even the last year's question, the tiffin box and the bottle, they did not ask for labeling. So मेरा प्रोसेस है कि don't do overdo things. मतलब अगर उन्हें पूछा तो मत करो। मतलब एक तो टाइम जाएगा, पहली बात तो टाइम मिलेगा नहीं। मतलब लेबलिंग का टाइम, मतलब भाई तुम्हारा सब पेपर होने के बाद लेबलिंग का सोचना। तुम्हारा सब पेपर होगा तो तुम ऑलरेडी आईआईटी में हो, तो लेबल करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो, फिर लेबलिंग का सोचना। और लेबलिंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट unless and until you're designing a product. Like for example, if they've given you a bottle and said कि इसका same form sensitivity का जो question आता है कि same to same form का तुमको bottle बनाना है, sorry, tiffin बनाना है, so then they don't want to know if you labeled or not.
They want to see how well you adapt the form. They have a specific criteria. You remember Anjali also said the same thing. Anjali said that seed restricts you in places. NID बोलेगा बनाओ हेडफोन, बस बनाओ हेडफोन. अब उसमें क्या करोगे बनाओ हेडफोन में? हेडफोन बनाने के लिए then they have no restrictions. Then you will have to like literally go beyond the C's and label and make whatever you want to do. तो उसमें थोड़ा मेहनत लगता है. Seed में not at all. That जरूरी was नहीं. because evaluation criteria and also they give it very specifically that what you're supposed to do. So easily I had this question. Yeah. हाँ एग्जैक्टली. सो डोंट ओवरडू इट. अगर पूछा नहीं है तो क्यों ही करना है? मतलब फिर उसमें अभी क्या होता है ना, अगर यू लेबलिंग इज वन एग्जांपल, इफ यू डू समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट आस्क्ड, यू आर क्रिएटिंग चांसेस फॉर द एग्जामिनर टू कट योर मार्क्स. अब तुमने जो एक्स्ट्रा किया उसमें कुछ गलत किया तो वो बोलेगा अरे Right. यू आर गिविंग देम मोर चांसेस टू कट योर मार्क्स, है ना? दिस इज व्हाट आई मतलब I agree. Yeah. है ना? Hmm. ओके, थैंक यू अदिति. एनीथिंग एल्स? बस No, just that. Yeah. Thank you. ओके. हाँ जी अभित, आओ अभित सर, और क्वेश्चन पूछेंगे और अपने वैसे डीएम मैं तो इतना परेशान कहता ना अभित भाई साहब. आई एम श्योर अप्रूवर बहुत परेशान करेगा. वो अकेला बंदा पूछे पड़ा होता है भाई. बताओ 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 बताओ, पूछ ले भाई. Yeah. हाँ ओके. तो नहीं थे, मतलब मेरे तो नहीं थे. बिकॉज या जब तुम पेपर शुरू करते हो तो यू टेक योर टाइम. ओके इतना टाइम इसमें दिया, बट धीरे धीरे वो एंजाइटी बढ़ती रहती है. तो शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन किए वो तो अच्छे थे, बट लास्ट में मैंने, मुझे याद है मैंने स्केचिंग वाला अटेम्प्ट किया था, स्केचिंग का कैरेक्टर वाला. तो वो मैंने बहुत गंदा किया था, बट बनाया था मैंने रफ आउटलाइन. इट वाज गुड बट नॉट वेरी नीट. So yeah, because of anxiety, you may differ with your sketching skill in the paper. ज्यादा निकले. I feel कि बहुत ज्यादा yeah, I guess, but they were not giving enough marks. मुझे ऐसा feel हुआ because I feel that coaching वाले push you to do more and they deduct your marks. So they will make your journey tough कि तुम और अच्छा से करो और अच्छे से करो. तो हाँ yes. इसलिए तो मैंने और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ऐसे नंबर आएंगे, बिकॉज मॉक्स में मेरे नहीं आ रहे थे. नहीं नहीं. वन थिंग दैट या कि मुझे नहीं पता था कि सोल्यूशन के लिए तुमको एक कॉपी मिलती है एंड यू हैव डेजिग्नेटेड स्पेसेस. बॉक्स बने रहते हैं पहले से, वो मुझे नहीं पता था. मैं ब्लैंक शीट पे करता था, तो उधर वो वेरी किया है वो चीज़. टाइम बच्चा भी, और हाँ कह सकते हो टाइम बच्चा, बट you have a habit to draw. Okay कि problem identification में I had a fixed pattern marks में. okay मुझे ऐसे लेआउट में करना है, बट वो जब एग्जाम में आया डिफरेंट लेआउट में तो थोड़ा सा हुआ था पैनिक कि अच्छा इधर इसको ऐसे बनाना है. यू हैव टू फिल द बॉक्स ऑल्सो ना, तुमको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा. तो यू हैड यस 10 प्रॉब्लम यस कोविड की निकालनी थी. ओके तो मतलब मुझे 10 नहीं सूझ रही थी, तो मैंने सिंपल जो मुझे लग रही थी मैंने उसको जुगाड़ बैठा के उसको मोड़ दिया कोविड की तरफ. फॉर एग्जाम्पल
जैसे वाटर लॉगिंग दिख रहा था मेरे को, तो वाटर लॉगिंग से इंसेक्ट्स बढ़ सकते हैं, तुमको मलेरिया हो सकता है, यू कुड बी मोर प्रोन टू कोविड बिकॉज यू हैव लो इम्यूनिटी. तो ओ भाई यू कैन फिट जुगाड़. हाँ लिखे थे. मैंने इतना जुगाड़ बिठाया एंड आई डिडंट रोट कि उधर साबुन नहीं है. मतलब सिंपल वाला मैंने लिखा, मैंने टफ जाके घुमा के उसको लिखा है. अरे इसका मैंने मस्त बताया था वीडियो में बताया कि मीट में बताया था, पता नहीं कि कोविड वाला जो क्वेश्चन था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उन्होंने बोला कि 10 प्रॉब्लम लिखो, 3 इलस्ट्रेट करो. 3 इतने सिंपल प्रॉब्लम लिखना कि तुम उसको इलस्ट्रेट कर पाओ. क्योंकि तुम 10 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रॉब्लम लिख दोगे, जैसे ये मलेरिया वाला है, इसको इलस्ट्रेट कैसे करोगे? यू कांट शो मच्छर मरे, किसी को मच्छर काट है, फिर मलेरिया हो रहा है, फिर कोविड हो रहा है. सो ऑलवेज बिकॉज यू हैव टू चूज ओनली 3 ऑफ दीज. तो तुम ऐसे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि तुमको बनाना नहीं है, तुमको बस लिखना है. So then you write 3 problems which अगर 5 illustrate करना है तो write 5 problems that are simple which you can easily illustrate. Illustration point of view सोचना. And बाकी you write all बाकी 5 बचे, 6 बचे, 8 बचे एकदम अतंगी विचित्र out of this world problems. वो लोग को लगे ओ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो हमने सोचा नहीं था ऐसा. सेम क्वेश्चन. मतलब मतलब आई फील दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर मी कि मेरे लिए वो इजी रहता है, तो मैंने किया था, अच्छे से किया था. एंड दैट वाज द लाइक वन ऑफ द स्टार्टिंग क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी आई फील. एग्जैक्टली नहीं याद, बट आई गेस गया होगा ओवर टाइम, बिकॉज क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा था कैरेक्टर स्केचिंग का, तो आई गेस सुंदर बनाने में थोड़ा टाइम गवा दिया मैंने. इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन से कि अपूर्व मैंने आपको भेजे थे मेरे सॉल्यूशंस इसके, आपने देखे हो तो, एंड यू टोल्ड मी कि एरो बना दो या ओरिएंटेशन चेंज कर दो. एंड आपको याद हो तो आपने मुझे ये भी बोला था कि मेरे सॉल्यूशंस आपको काफी अच्छे लगे. तो आप कैसे अप्रोच करते थे इनको, कि आप क्या इलस्ट्रेशंस बनाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो दिमाग में है वो बना देते थे, क्या बनाते थे आप इसमें? ओके हाँ, ये काफी लोग के डाउट्स थे डीएम आए मेरे को कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो मैंने सबको ये बताया है कि इफ यू गेट अ बॉक्स की जिसमें ऐसा बना है डूडल, तो यू शुड नॉट ओनली लुक फ्रॉम इसी एंगल से, यू शुड रोटेट योर पेजेस एंड सी फ्रॉम ऑल द एंगल्स. तो अलग अलग एंगल से देखोगे तुम, तो तुमको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्या क्या अलग अलग चीजें दिख सकती है तुमको इसमें, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कई सारे आइडियाज आने के लिमिटेड टाइम में. यस वो तो है, पर मेरा कैसे कि मैं जब ये क्वेश्चन करती हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ इलस्ट्रेशंस आते हैं, क्योंकि मैं वही टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस और समथिंग. मतलब उसमें मेरे को जैसे लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन था कि ऊपर एक वाई शेप का एक डब्बा जैसा था, तो अभी जब ग्रुप में ये सॉल्यूशंस आए तो उसमें काफी लोग उसको टूल बॉक्स बना देते हैं, पिज्जा का बॉक्स बना देते हैं, ऐसा सब कुछ कर देते हैं उसके साथ. मेरा नहीं होता वैसे, मतलब मुझे आते ही नहीं वैसे आइडियाज. आई विल गो टू कुछ अलग ही बनाती हूँ मैं. बट हाँ, तो मतलब जो बनाते हो वो दिखता तो है ना कि क्या तुमने बनाया है, दैट ओनली मैटर्स. तो हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल क्या बनाया मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई एग्जांपल. हाँ मैं बताती हूँ. जैसे वो वाला ये पता नहीं कि आइडिया मेरे को बहुत कॉमन आता है कि मैंने जो ये बॉक्स था लास्ट ईयर के क्वेश्चन का, जिसमें ऊपर 3 लाइंस थे और तीनों को ना मैंने सिगरेट्स बनाया, लाइक वो तीनों को दिखाया कि ये सिगरेट्स हैं तीनों, और एक सिगरेट जल रही है, उसकी ऐश गिर रही है, और वो ऐश वो ऐश ट्रे में नहीं गिर रही, कलश में गिर रही है. तो मैंने लिखा नॉट ऑल एशेस विल फॉल इन द ऐश ट्रे एंड स्मोकिंग किल्स. It was very creative. I was like mind blown with that idea.
So you should not. नाइस आइडिया यार. हाँ मतलब मेरे को यही टाइप के आइडियाज आते हैं व्हेन आई डू दैट क्वेश्चन. मेरे को ये प्रोडक्ट पिज्जा बॉक्स वॉक्स नहीं आता मेरे दिमाग में. If you have like तुमने कुछ बनाया and वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग के अलावा भी कुछ और थर्ड मीनिंग वो जनरेट कर रहा है तो देन तो वो काफी अच्छा सोल्यूशन है. Because it was not only cigarette and it was not only a kalash, it had a moral coming out from that box कि cigarette पियोगे तो मरोगे. तो yeah, that was good. Okay. डाइवर्सिफिकेशन अभी डाइवर्सिफिकेशन इज द की. इसने जो बनाया है मतलब मैंने भी यही किया था. आई न्यू डूडल जब बनाना है डोंट मेक द सेम थिंग एवरीवेयर. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बहुत लोग के डूडल्स देखे हैं, सब लोग प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर सम रीजन कि सीजर फिर टिफिन फिर बॉटल फिर ये फिर वो. डोंट डू दैट. एवरी टाइम यू आर फॉर्मिंग और सॉल्विंग डूडल क्वेश्चन have one or two ऐसे deep meaning वाले illustrations, have one or two products, try to make a scenario, try to make, for example, I made embroidery. मैंने काशी दकारी embroidery होता है, मैंने उसका पैटर्न मेरे को याद था, मैंने उसका पैटर्न बनाया था. फिर मैंने एक टॉय बनाया था जो कल्चरल था, मतलब it had a ethnic meaning. I made a toy like that. So when you do things like that, उसमें क्या होता है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन डूडलिंग में आती है. एंड उसके बेसिस पे every time you make some kind of doodles, then you have like a little more idea, and your examiner also knows that you have to make things that don't only have one particular meaning, but तुमके पास बहुत सारे other options होते हैं जज करने के. अच्छा, I'll just come back in 1 minute. I'll just come back in 1 minute. Please continue तब तक. Next जिसको भी पूछना है, संगम had a question. संगम पूछ ले. I'll come back. Okay. Hello again. तो एनआईटी में कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे मतलब पोस्टर बनाने के, जिसमें टॉपिक था वेजिटेरियनिज्म. ठीक है, तो इसमें आप उनको एनिमल अब्यूज मतलब एनिमल नहीं खाना वो पोस्टर में दिखाने तो ऑफ टॉपिक हो जाएगा क्या वो? कौन सी डिसिप्लिन में? डिसिप्लिन मेरे को पता नहीं, मॉक्स में दिखे थे मुझे. ओके. हाँ, तो वेजिटेरियनिज्म तो मैंने ये दिखाया कि एनिमल को मत खाओ वगैरह, तो वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा? नो, कहाँ ऑफ टॉपिक हो रहा है? टॉपिक वाज वेजिटेरियन ना. नहीं तो हाँ, तो प्रमोट तो वेज करना चाहिए था, तो एनिमल में लाया तो शायद नहीं. और सेकंड क्वेश्चन था यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो इसमें यूजेस दिखाने के मिस यूजेस दिखाने मतलब पोस्टर मेकिंग में, वो भी कंफ्यूजिंग था. यू कैन शो यूज, अगर यूजेस पूछा यू शुड शो यूजेस ना. हाँ, एंड वेजिटेरियनिज्म मतलब ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा नहीं, इफ थोड़ा घुमा के भी लिख दिया तो शायद. आई सजेस्ट कि हाँ थोड़ा ऑफ टॉपिक था कि यू शुड नॉट ईट एनिमल. थोड़ा ऑफ टॉपिक है क्योंकि तो टॉपिक वाज वेजिटेरियन को प्रमोट करना, वेजिटेरियनिज्म को, तो यू शुड मेक इट स्टिकिंग टू द टॉपिक. अच्छा, बस इतना पूछना था. थैंक यू. Yes, Juhi has a question. Juhi? Yeah, I just wanted to ask, so there are a few questions in sheet जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया रहता है और उसमें बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो एंड देन मेक अ रीडिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव स्टेटेड, राइट? सो इन सच क्वेश्चंस सो व्हेन आई वाज सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, तो सिंस आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा भी माइंडसेट कैसा जाता है कि आईओटी को इंटीग्रेट कर दिया या और कोई चीज इंटीग्रेट कर दी, बट समवन टोल्ड मी कि वी शुड अवॉइड डूइंग दैट and it should be more towards the design part. So I'm not able to understand कि मतलब वो पूरा eliminate ही कर देना चाहिए IoT का use or some other what do we say, some other technology that can make the life easier. So should we avoid that completely? Okay, तो इससे मुझे वो क्वेश्चन याद आ रहा है जो लास्ट ईयर आया था, टूथब्रश में आइडेंटिफिकेशन करना प्रॉब्लम्स का सीड में. तो इट वाज मोर ऑफ बेसिकली फॉर्म का क्वेश्चन. तो मींस कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है. वो शायद वो टूथब्रश थोड़ा एंगल्ड था, उसके ब्रिस्टल्स थोड़े एंगल्ड थे. तो उसको इमेजिन करो अगर तुम यूज कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे उसको यूज करने में. तो मेंशन दैट, आई गेस दैट इज इनफ
you should अगर प्रॉब्लम पूछा है तो तुम IoT कैसे डाल सकते हो कि IoT नहीं है इसमें, बिकॉज यूजुअली नॉर्मल प्रोडक्ट्स में नहीं होता IoT. सो बेसिकली अगर वॉकिंग स्टिक का जो रीडिजाइन था, राइट, सो उसमें मुझे क्या आइडिया आया था कि SOS का जो बटन था उसको क्लिक करके द स्टिक कुड बी लिंक थ्रू IoT थ्रू योर मोबाइल डिवाइस. तो अगर जब वो बटन क्लिक हो रहा था तो डायरेक्टली IoT के थ्रू मोबाइल पे मैसेज जाएगा एंड देन इट विल इन्फॉर्म ऑल योर कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली, राइट. सो इन सच केसेस यू कैन इम्प्लीमेंट IoT, राइट. सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मतलब मुझे किसी ने बोला कि अवॉइड डूइंग दैट. या Why? मतलब इनिशियल क्वेश्चन क्या था? मींस यू हैव टू रीडिजाइन द स्टिक. हाँ, मतलब एक वॉकिंग स्टिक है एंड उसको मतलब रीडिजाइन करना है to like, yeah, we have to make it more usable basically and we can integrate more things. like अभी मैंने दूसरा क्या किया था, that is like a really common thing कि मतलब old age people when they are using it उनको कोई सामान पकड़ना होता है तो फिर थोड़ा मतलब वो सामान पकड़ने के लिए मोबाइल रखने के लिए वो सब तो हो गया, दैट्स फाइन, टॉर्च डाल दिया, राइट. सो अनदर थिंग लाइक आई थॉट कि IoT जो था वो एक डिस्टिंक्शन फैक्टर था क्योंकि मुझे लगा कि नॉट मेनी पीपल वुड थिंक अबाउट इट. Okay. Yeah, it was cool, I guess. It would work fine अगर तुम IoT introduce कर रहे हो तो. It was not IoT, I guess. It was an SOS button linked to internet. So it would work fine. So yeah. ओके एंड बेसिकली तो फिर ये जो रहता है क्वेश्चंस उसमें आई हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द डिजाइन एस्पेक्ट्स एंड देन इफ आई कैन इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी देन आई शुड, राइट. Sorry. आई वाज सेइंग कि अभी पहले डिजाइन पे फोकस करना चाहिए कि मतलब डिजाइन वाइज क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है प्रोडक्ट में एंड पोस्ट दैट टेक्नोलॉजिकली कुछ अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो ही वी कैन डू इट, राइट. सो टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी द फोकस. Yes. मीन्स तुम कुछ ऐसा भी मत बोल दो कि जो भी पॉसिबल नहीं है. मे बी इट विल बी कि इनोवेटिव इन द सेंस कि तुम कुछ उसमें कुछ वो डाल सकते हो, कुछ नई टेक्निक डाल सकते हो. जैसे वो होता है, क्या कहते हैं उसको, होलोग्राम टेक्निक कुछ डालो. तो दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल, वेरी feasible right now, but yeah, you can take that independence, creative independence बना के. मतलब पर्सनली आई डोंट फील कि ये कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. राइट, मेक सेंस. तो फिर और मैंने ऐसा ही रीडिजाइन का क्वेश्चन था एक्चुअली पहले पूछा हुआ था कोई तो पेपर में कि फैन को ऐसे रीडिजाइन करना था कि वो क्लोथ ड्रायर जैसे भी यूज हो सके. सो इनिशियली आई थिंक आई विल शेयर माय स्केचेस विद यू मे बी. सो इनिशियली मैंने क्या किया था कि वो जो सीलिंग फैन रहता है उससे लटकता हुआ एक ऐसा पूरा सिलेंड्रिकल एरिया जैसा बनाया था जिसके अंदर परफोरेटेड होल्स थे एंड हैंगर जैसा था. सो लाइक I got a review कि मतलब I should like this is like a really common thing, right. So someone told me कि ये सबके दिमाग में सबसे पहले आएगा तो it should be something different. तो then उसके बाद अभी since I'm at home and अभी मैंने recently start किया है तो I don't have much knowledge तो मैं सब गूगल करके पढ़ रही थी. तो फिर मतलब वो फैन ब्लेड्स का एंगल के बारे में पढ़ा एंड देन वो जियोडेसिक डोम और वो सब रहता है वो सब पढ़ा एंड तो वो सब कंबाइन करके आई क्रिएटेड अ डोम शेप प्रोडक्ट ऑन अ स्टैंडिंग फैन बेसिकली. मतलब वो जो लंबा फैन होता है, राइट, टेबल फैन जैसा, उसके साथ. एंड देन उसके आई क्रिएटेड 2 लेयर्स एंड उसके जो 2 लेयर्स के बीच में मैंने बैम्बू चारकोल ऐड किया क्योंकि मैंने एक पेपर में ही देखा था कि बैम्बू चारकोल इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर. हाँ, तो फिर वो सब यूज करके मतलब मैंने बनाया तो भी मतलब आई गॉट अ रिव्यू कि इट्स लाइक डिसेंट, इट्स नॉट वेरी ग्रेट. सो नाउ आई डोंट नो और क्या करना चाहिए. Who is giving these reviews? I think these are like good ideas and like एक पे ही मत अटके रहो क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आना तो तुम उसी पे रिसर्च मत करते रहो.
take the review as like कि क्या तुम include कर सकते हो. For example, अगर उसने बोला कि तुम थोड़ा और काम करो, okay, think कि जैसे तुमने ऐड किया चारकोल वाली चीज कि you can put some specific materials that has some specific property that can perform well for that particular kind of product. So you added that. That will give you an edge compared to others. So I think that is good. And yeah. Okay, And thank you. these reviewers will like push you and not very appreciate you for what you will do, because they ideally want you to do more and more and finally improve in the actual exam. So yeah, don't take it by heart and केवल एक में उलझे रहो. You should move on to other question also. Yeah, makes sense. Thank you. Yeah. Okay, Rhythm also has a question. Rhythm, can you Yeah, ask another another question. Actually, like we have to make to give some solutions for some questions or unconventional uses of something, like 5 uses. I think of some things, but I judge myself that these are not unique, or I don't trust myself, and then I end up thinking a lot, and at last I have to draw those only. Okay. Like So I don't think these are unique, but sometimes they end up unique, sometimes they end up common. no problem ना. अगर you have allotted some time, because ये time का खेल है. अगर तुमने time पे नहीं किया वो तो नहीं count होगा, तुम्हारा marks अच्छा नहीं आएगा. तो you should devote specific amount of time कि इतने में तुमको सोचना ही. अगर नहीं आ पा रहा इसके अलावा कुछ idea तो यही draw करो. I will suggest. अगर मतलब empty slate देने से better है तुम कुछ draw करके भेजो उधर. Yeah. Yeah. So don't look after कि ये unique नहीं है, ये unique है. Means it should be unique, but something is better than nothing ना. ये भी है. Okay. Yep. Hello, Apur. Hi. Apur, I just had a doubt. Like, I take so much time to do comprehensive questions. So, do you have any tips for like reducing the time or finding the answers quickly or something like that? Comprehensive question in a sense. Can you give an example? Example, they give a sentence, right? And sentence would be like a whole page, and the questions will be just to find 3 or 4 simple answers. So to like basically in NID they give that. Oh, unseen passage. Yeah. Unseen passage. Yeah. Okay. Sorry, what was the question related to it? Like how to solve it quickly, or do you have any idea to read it quickly and find the answers? Okay. Yeah, what I do is like go through the questions first and read the para once, and go through the question again and find those answers in the particular passage. So that ideally helps me. So you can follow that also. All right. Thank you. Comprehensive questions का तो बहुत त्रास है. मतलब मेरे को लंबा पढ़ने को हम लोग कौन, it's like literally giving 30 seconds of your life to that question. 34 just to read the question. Solve नहीं, just to read. 1-2 मिनट में पढ़ने में जाता हूँ. तो I do that last. Last. ठीक है. I do that last. मतलब टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में और सॉल्व करने में you can do 3-4 more जीके वाले फटाफट वाले क्वेश्चन. This is what I think. मेरे हिसाब से see, this is something जो सबके लिए common है. Everybody has to see, like Anjali gave you a very good starting में जो बात की उसने levels का, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4, level 5 would be when you are completely identified your strengths, identified your weaknesses, and you are sure कि भाई मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता है. Then what happens in the exam? You strategize कि भाई ये मेरे को नहीं आता तो मैं इसको टाइम वेस्ट क्यों करूँ. मैं चिल्ला के बोलता हूँ मेरे को सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तू मेरे को 2 घंटा दे एक क्वेश्चन के तो भी मेरा आंसर गलत ही आएगा. So then when I know that for myself, then why would I give my time to that question?
अभी comprehensive भी ऐसा है, I know it's easy, I'm not saying difficult, but it's time consuming. See, it's more like a psychological paper that they are testing, and you should know that these questions are made to waste your time. वो बीड्स वाला क्वेश्चन जो था सीड में लास्ट है, इट वाज मेड टू वेस्ट योर टाइम यार, मतलब वो बनाया ही इसके लिए था कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो. सो यू फील वेरी स्मार्ट अबाउट दिस थिंग्स. कॉम्प्रिहेंसिव वाला क्वेश्चन यू नो, पैराग्राफ की साइज देके समझ जाओगे कि इसमें पढ़ने में 2-2.5 मिनट जाएगा पढ़ने में. तो अच्छा, एक और मेजर स्ट्रेटेजी, समझो टाइम नहीं है और वो क्वेश्चन के लिए तुम्हारे 2 मिनट बाकी है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट कॉम्प्रिहेंसिव वाला क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. If you read the question first, you find out keywords from the question and then look for those keywords in the paragraph instead of reading the entire paragraph. This is what I did. मैंने कोई भी आज तक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा नहीं पढ़ा होगा. मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है, एजुकेशन, टर्म्स, वर्कर्स. आई टर्म्स दिख गया मेरे को 2-3, मैं उसमें ढूंढता हूँ एजुकेशन, तो यहाँ पे वो लाइन, वो पैराग्राफ ऊपर नीचे 2 लाइन पढ़ा, आंसर मिल गया. दिस वर्क every time. So do this. All right then. Thank you. Okay. I think we covered all the questions. जिसके इसके थे सब chat box में खत्म हो गया. I read out everything. And if anybody has any last couple of questions, then we can give Apurva some chutti. Apurva had to finish this in 1 hour, and it's been 2 hours. So I would want to wrap up as soon as possible. Who has any more questions? Please, 2-3 more questions. Last. Yes, I have. हाँ वैदही बोलो. हाँ, तो मैंने सीड के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए ऑलमोस्ट सारे, मतलब जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर लिए. आई यूसीड, बट यूसीड के क्वेश्चंस मुझे बहुत टफ लग रहे हैं. मतलब उनका लेवल है ना, जैसे ईयर लेटेस्ट हो 21 का पेपर देखा वो ज्यादा टफ था, का देखा वो थोड़ा कम था, 19 का और थोड़ा कम था. तो यूसीड के पेपर्स आर लिटिल ओवरवेलमिंग टू मी. सो शुड वी सॉल्व इट और we should just keep it aside? I solved seed का पेपर अच्छे से. Then when I was out of question, then मैंने उठाया था USEED, although मैंने एक भी कंप्लीट नहीं किया. तो you can. हाँ, मतलब मैंने USEED ना वही सॉल्व किए, क्वेश्चन पेपर जैसे खोला तो जिसमें बहुत टाइम लग रहा है उसको छोड़ रही हूँ मैं, और जो मुझे जम रहा है वो फटाफट पहले सॉल्व कर रही हूँ. So that is how I am going about the question papers. So is it the way? Yeah, you can do it. But yeah, if you are like want to gain some more knowledge about what kind of topics are covered in part A of SEED, then USEED is a good kind of question bank you will get. Similar of questions. Any examiner ने set किए ना वो, तो you can. Yeah. And the second thing is, जैसे अभी लास्ट का 1 महीना बाकी है, so ऑलमोस्ट मतलब मैंने सीड के क्वेश्चन पेपर्स के अलावा कुछ भी किया नहीं है. पार्ट ए के लिए तो किया नहीं है, पार्ट बी के लिए क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व नहीं किए, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा स्केचिंग किया है. सो स्केचिंग लेवल इज लाइक ओकेश नाउ. आई एम स्टार्टिंग पार्ट बी क्वेश्चन पेपर्स, बट द थिंग इज आई एम ट्राइंग टू मैनेज पार्ट ए भी सॉल्व करना है मुझे, पार्ट बी भी सॉल्व करना है, मतलब स्केचिंग पार्ट भी करना है, ए वाला सेक्शन भी करना है और जीके भी पढ़ना है. तो तीनों एक दिन में मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब हाउएवर आई एम ट्राइंग, तो वो तीनों हो नहीं रहा है. सो हाउ डिड यू डू, लाइक एक दिन में तीनों करते थे टॉपिक्स एवरीडे 3-3-3? ओके, मींस मैं एक पेपर लेता था, जैसे मॉक दिया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया, तो देन जो मेरे को नहीं आ रहा, मतलब प्रॉपर 3 घंटे में मैंने पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व किया है. ऐसा नहीं कि पार्ट ए पहले कर दिया पार्ट बी बाद में. यू सॉल्व इंटायरली इन 3 आवर्स, तो तुम्हारा एक फ्लो बना रहेगा पहली बार. एंड यू शुड राइट योर वीकर टॉपिक्स एक जगह पे कि क्या तुमको दिक्कत आ रही है पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी, कि क्या क्या टॉपिक्स तुमको कवर करने हैं. एंड उसको चाहे तुमको आधा दिन लगे, 1 दिन पूरा लगे या नेक्स्ट डे भी लग जाए, यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर पेपर इंटायरली. कि अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक से कोई भी बंदा पूछ ले, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. सो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन पेपर इन दिस वे ओनली. अगर तुम जल्दबाजी में करोगी तो उसका मतलब ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक्स अच्छे से कवर ही नहीं हो पा रहे. तो टेक योर टाइम. इट ऑल्सो टुक, मतलब कई क्वेश्चन पेपर्स को लगाने में अच्छे से मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था शुरुआत में. एंड बिकॉज कि एंड जैसे जैसे मैं यूज्ड टू हो गया था, तो वही टॉपिक्स बार बार आ रहे थे, तो धीरे धीरे मुझे कम टाइम लगने लगा मॉक्स लगाने में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगाने में. So yeah, it will take time initially. So don't fear from that.
Okay. Thank you, Vaidehi. Okay, I think Sankalp has the last question. Sankalp, पूछ लो. Yeah. Hello, Apurv. Hi. I'm for BDES actually. And since you know NID के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं, तो इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए? NID के लिए you should practice sketching a lot, and you can also look upon your weaker section की क्या तुमको, मतलब ये हर इंडिविजुअल पे वेरी करेगा कि क्या उसका वीकर सेक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा. किसी का पार्ट ए नहीं कंप्लीट हुआ रहता तो यू शुड फोकस ऑन पार्ट ए की उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इफ़ यू आर नॉट गुड एट रीजनिंग किसी पर्टिकुलर टाइप का, फॉर एग्जांपल काउंटिंग सर्फेसेस, तो यू शुड डू मोर सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. तो वेरीज. ओके, थैंक यू दानिश. वेलकम. थैंक यू. ओके, थैंक यू. अपूर्व, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अपूर्व भैया ये बता दो कि विच मॉक टेस्ट वुड यू सजेस्ट? बताओ यार. मतलब मैंने तो जो भी मिल गए थे मेरे को मैंने लगा लिए थे. मैंने मांग के भी लगाए थे लोगों से जिन्होंने खरीदा था. तो यू गेट अ PDF फ्रॉम सम कोचिंग्स, तो you can ask from people. You can ask for screenshots. So yeah, also हाँ pretty much कि जो मिल गया मैंने लगाया है अपने हिसाब से. So okay, can also do that. Yeah. ठीक है. किसी का कोई questions or you want to close the session and give Apurva some break because he's been talking for a long time? You guys done? Yes. Okay, I don't see any more questions. Thank you, Apurva. Thank you for joining. Thank you for giving 2 hours of your precious life. I know you didn't want to extend it over 1 hour, but thank you that you gave me your time. I hope this was helpful. मजा आया कि नहीं? It was helpful. Yeah. Thank you for organizing this. Like I was very nervous कि कैसा होगा, but it was very nice. And No, I know. Helpful for me also. Like हर एक को इंडिविजुअल बताने से अच्छा है सबको एक जगह बुला के बता दो सारी बातें. Exactly. Yeah. Okay. Thank you, Apurva. Thank you so much for joining. And I will upload this on YouTube, guys. YouTube पे डाल दूंगा, जिसने मिस किया YouTube पे देख लेना. And I will tag Apurva. Apurva, thank you so much. If people give you a lot of DMs after this, please don't come to me and tell me कि दनिश बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं. That is not on me. मेरा काम हो गया. इसके बाद देख लेना आगे. जिसको रिप्लाई करने कर देना. And if possible, I know time का तो constraint है ही. I will, if you use Telegram, you are in the group, right? You join the group. So if possible, and if you have any of your sketches left as sketches के resources, anything you have compiled, if you can share them, because मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि everybody who comes, if they can share their sketches on the group, ना, what you had made at that time, if you have them, if you can share them on the group, it will help everybody to see your sketches. Yeah, sure. है ना? If you can do that. I shared some of my sketches with some of the people, so I can share it in the group. हाँ, you can share it on the group, please, if you can. Sure. Okay. Thank you guys. See you day after tomorrow. We have one more NID graphic design aspirant. मतलब बहुत मस्त है वो बंदी. She's my friend, तो मजा आएगा. वो podcast भी अच्छा होगा. See you guys day after tomorrow. Thank you, Apurva. See you guys. Bye. Thank you, Apurva. Thank you guys.